I tell you. Let me tell you, sir, in this house itself. Let me tell you, sir. Please conclude. I will conclude it. I will conclude it, sir. I will conclude it. I have said, in a non-BJP state, governors are acting beyond the constitution. Sir. No, please. Cannot discuss. Okay. All right. All right. 352, sir. 352, sir. Sir, the member while speaking shall not reflect upon the conduct of the persons in the high authority unless the discussion is based on the substance in proper terms. Governor is a high officer. He cannot that should be explained, sir. And he should be asked not to speak about the conduct of the governor. Please, sir, I am not. All right. Okay. I am not using the word. I am using the expression. Why? A person appointed under Article 53 of the Constitution of India can act in complete breach of the Constitution. Yes. In complete breach of the Constitution. How? How the women commissioner, why they have not gone? Sir, I tell you one thing. They kindly allow me to use this expression to it now. I have said in non-BJP state or non-BJP state, but I must say with honesty, let me candid before you. Now, please. Please. One governor I have seen. That's the governor of the Manipur. I tell you, yes. Again, no. Again, why are you quoting? Why are you quoting any governor? We urge you to not to allow such thing. He cannot keep on going the conduct of the government, whether this state or that. The rule is very clear, sir. Rule 352 is very clear. He cannot discuss, sir. Kindly hear me. I am not I am praising her conduct. Then we will have to speak about what has happened in the West Bengal during the present government. Whatever we will discuss it. What he is speaking. Mr. Sarkar, sit down. Your ministry is going to be dropped. Sit down. Sit down. Anybody to sit down. Going to be dropped. Sit down. Please, Kalyan. Okay. All right. Okay. Let me place it. Then I must say, one person appointed by the central government under Article 153 of the Constitution of India is really acting at Manipur. She has said to us, our team again you are doing the same thing. She has said to us very clearly, nothing will go on record. The government chief minister is not. Nothing will go on record. Discuss on the West Bengal. West Bengal में इन लोगों ने महिला के ऊपर अत्याचार किया है. तभी हम चर्चा इसी बिल में हम करना चाहते हैं, सर. देखिए, please बैठिए, Mr. Reddy, please. You must have patience. Okay. Sometimes you must have the degree of tolerance. Thank you, sir. This is the reason whole India is burning. Okay. Thank you. Mr. Reddy, you start, please. You please start. आप बोलिए. उनका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है. Nothing is going on record. आप please. Only Mithun Reddy will be. Please sit down. बैठ जाइए. आप भी कृपा करके बैठ जाइए. आप भी बैठ जाइए. Please sit down. Please. कल्याण दा आप बोलिए. मिथुन दा बोलिए. मिथुन जी आप बोलिए. थैंक यू सर. एक मैं निवेदन करना चाहता हूं. एक सेकंड. देखिए, चर्चा का समय बीएसी द्वारा निर्धारित होता है. 3 घंटे इस चर्चा का समय निर्धारित है. उसी के अनुसार आप इस बात को जानते हैं, समय का विभाजन होता है, समय का अलॉटमेंट होता है. 1-2 मिनट ऊपर नीचे होता है तो चेयर भी इस बात की चिंता करती है. लेकिन आप यदि बहुत अधिक उसका अतिक्रमण करेंगे समय सीमा का, तो ये उसको फिर व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाएगा. प्लीज मैं आपको नहीं कह रहा हूं. मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं. तो कृपा करके जो समय आपको अलॉटेड है, कभी भी घंटी उससे पहले नहीं बजेगी. परंतु घंटी यदि बजती है तो विद इन अ मिनट और सो यू शुड कंक्लूड योर स्पीच. नाउ प्लीज मिथुन रेड्डी, आप बैठिए तो सही. नाउ प्लीज मिथुन रेड्डी. ओके आप बैठिए. गवर्नर के विषय में कुछ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं उन पर कहने की आवश्यकता नहीं है. प्लीज. Sir, thank you for letting me talk on this bill. जी. The national capital of Delhi, 2023. Sir, I would like to be very brief on this bill because it's not related to our state and this is a unique bill.
unique being that both the central and the Delhi governments are stakeholders in this. Sir, the central government, as we all know, operates from Delhi, and Delhi is a union territory with a elected assembly. The foundation of the discussion lies in Article 239A of the Constitution, which grants Delhi a special status as a union territory with legislative assembly and council of ministers headed by a chief minister. The legislative assembly possesses the authority to make laws within the state and concurrent lists, except for those explicitly excluded by the Constitution. However, this bill, the basic ordinance aims to restore certain powers to the Lieutenant Governor, and the ordinance also appears to be within the scope of review of the Supreme Court's judgment, sir. If you see, the court recognized the Delhi government's legislative and executive power over services. It did not explicitly prevent Parliament from legislating on the same subject. In fact, Article 239A of the Constitution grants Parliament the authority to pass laws related to services, even though they fall under the exclusive competence of the states, sir. Sir, I would like to be very brief. As I already told, I request the government to take all the stakeholders into consideration. And with these words, I also have a request, sir. This is a unique bill, and hope this bill is not replicated for the other states. And with these words, we support the bill, sir. YSR Congress Party supports this bill, sir. Thank you. Rahul Shivale ji. Okay. I ask them to mind their own business, sir. Thank you. Please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 239AA दिल्ली विधानसभा को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि। संसद दिल्ली के संबंध में राज्य सूची के तहत विषयों पर भी कानून बना सकती है और ये कानून राज्य कानूनों के प्रतिकूल होने की स्थिति में मान्य होंगे। अध्यक्ष जी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। अध्यक्ष महोदय, संविधान में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रतिकूल स्थिति में दिल्ली में प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून बना सकती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली सरकार द्वारा तुरंत अधिकारियों के तबादले किए गए और आधी रात को कार्यालय खोले गए और भ्रष्टाचार से संबंधित फाइलों को नष्ट किया गया। अगर दिल्ली सरकार इतनी साफ सुथरी होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद तबादले नहीं करती और न ही आधी रात को कार्यालय खोलती। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थिति क्यों आई। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलों में बाढ़ से आ गई है, जैसे कि सीसीटीवी घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बिजली घोटाला, परिवहन घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता इत्यादि। वही दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना रही थी और मनमाने के तरीके से उनका ट्रांसफर कर रही थी, जिससे अधिकारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली न केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि यह देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली सरकार की इन कृत्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष जी, यह किसी से छिपा नहीं कि दिल्ली सरकार के एक उप मुख्यमंत्री जेल में है और एक मंत्री हाल ही जेल से जमानत पर बाहर आए। जो लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दा बनाकर दिल्ली में सत्ता में आए थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अगर सत्ता में आए तो सारे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डाल देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा करते थे कि अगर सत्ता में आए तो न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न सिक्योरिटी लेंगे, जनता के आम आदमी है, आम आदमियों की तरह रहेंगे। लेकिन सत्ता में आते ही एकदम बदल कर गाड़ी भी लिया, बंगला भी लिया और सुरक्षा भी ली, और तो पंजाब में सत्ता में आने के बाद पंजाब से सिक्योरिटी भी ली है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा शराब लाइसेंस
की नीति निजी लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिसका अर्थ है व्यापारियों से रिश्वत कमाना। यह बात जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, वह पहले ही बता वह बंगला भी लेता है और अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उस बंगले की मुरम्मत के लिए 53 करोड़ खर्चा करते हैं। विदेशियों से मार्बल मंगाया जाता है और 9-9 लाख का एक पर्दा लगाया जाता है। अध्यक्ष, निर्माण कार्य की प्रारंभिक लागत 15-20 करोड़ थी। हालांकि इस समय पर बढ़ाया गया, इस समय पर उसको बढ़ाया गया था। ऐसा रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल लगभग 53 करोड़ खर्चा किया जा चुका है। प्रारंभिक अनुमान से 3 गुना से अधिक है। अध्यक्ष जी, एमपीडी 2021 का एक घोर उल्लंघन है। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि जो लोग पानी पी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसके द्वारा किए गए घोटाले के लिए कोसते थे, वही लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के घोटाले में उसका साथ दे रहे हैं। आए दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के साथी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा किए भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करते थे। क्या यह केवल जनता को गुमराह करने के लिए थे? फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साठगांठ कर ली है क्या? ये लोग सत्ता के लिए देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं और कांग्रेस को तो किसी भी हालत में देश को सत्ता चाहिए। कांग्रेस को तो किसी भी हालत में देश की सत्ता चाहिए, इसलिए तो वह जिन लोगों को भ्रष्टाचार के लिए कोसते थे आज उनके साथ गठबंधन बना रहे। इसलिए दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए आप सरकार के भ्रष्टाचार को किसी हद तक रोकने को और इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अतः केंद्रीय सरकार द्वारा संविधान सम्मत यह बिल संसद में लाना पड़ा। सभी सांसदों से मेरा अनुरोध है कि इस बिल को पास करने को सहयोग करें। धन्यवाद। श्री राजीव रंजन सिंह जी। सभापति महोदय, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी इस बिल को पेश करते हुए कई संवैधानिक बातों का उल्लेख किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पारा का भी उल्लेख किया, लेकिन शायद उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इस देश में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को है और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने 11 मई के अपने फैसले में इसकी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने पढ़ा, कई प्रावधान पढ़े, कई पारा पढ़े, लेकिन जो उनकी सुविधा के मुताबिक उनको सूट करता था वो पारा उन्होंने पढ़ा। पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ा उन्होंने। पूरे जजमेंट में विस्तृत तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दिल्ली के क्षेत्राधिकार के मामले में व्याख्या की है, संविधान की व्याख्या की है, कानून की व्याख्या की है। लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने की? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं, 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप
व्याख्या कर रहे। आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? हासिल आपका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। आप अभी बात कर रहे थे गठबंधन के, आपने विस्तृत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हम एक पारा पढ़ना चाहते हैं, कई पारा को पढ़ा है, कल्याण बनर्जी साहब ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा। फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है, संघीय ढांचा पर आघात है। ये जो अमेंडमेंट आपने ऑर्डिनेंस बिल लाया है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 162 पारा 162 का एक पारा, हम सिर्फ 4 लाइन आपको पढ़ के सभापति महोदय सुनाना चाहते हैं। वी रिट्रीट that in light of Article 239AA and the 2018 Constitution bench judgment, the Lieutenant Governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers of NCTD in relation to matters with the legislative scope of NCTD. As we have held that NCTD has legislative power over services, excluding public order, police and land. Under entry 41 in list 2, the Lieutenant Governor shall be bound by the decision of GNCTD on services as explained above. To clarify any reference to Lieutenant Governor over sub-services, excluding services related to public order, police and land, in relevant rules shall mean Lieutenant Governor acting on behalf of GNCTD. सारा तो स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आपको क्या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी? क्यों आप इंतजार करते रहे? आपने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, तो रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल किए थे तो रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार करते। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं किया। आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है गर्मी की छुट्टी के लिए, और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर रहे। आपकी मंशा है, आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में। ये कौन सा शासन आप चला, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं, बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए। एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड प्लीज एंड ट्राई टू कंक्लूड आल्सो प्लीज। इसलिए सभापति महोदय, इसीलिए प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नो, बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बोलिए। इसीलिए सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। अभी गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, आप प्लीज, स्वागत, आप तो बैठिए ना, बैठिए, अभी अपनी बात पूरी करिए। अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की। आप ही चलाइएगा, आप तो बैठिए। जी, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। इसलिए सवाल, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए।
सभापति महोदय, अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं। और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी। इसलिए चिंता मत करिए, धन्यवाद। जनता देख रही है आपको भी। 2024 में आपका भी फैसला जनता कर देगी। और इसी के साथ अरे कैसे खत्म हुआ? आपने अभी तो कर दिया भाई। नहीं हो गया ना, पूरा अभी नहीं कंक्लूड करने दीजिए। कीजिए तो इसलिए पूरा कीजिए। इसलिए सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यह बिल अरे बैठिए, पीछे बैठ जाइए। यह बिल जो आया है, यह बिल लोकतंत्र का विरोधी है। लोकतंत्र को समाप्त, वैसे इनकी मंशा है, इस सरकार की मंशा है लोकतंत्र के सारी संस्थाओं आपने कह दी अपनी बात, आपने सारी बात कह दी है। संस्थाओं को ध्वस्त करना इनकी मंशा है। ये कर रहे हैं, लेकिन यह लोकतंत्र विरोधी है, संघीय ढांचा के खिलाफ है। मिश्रा जी, इसलिए हमारी पार्टी और हम लोग इसका विरोध करते हैं। बैठिए। नो प्लीज सिट डाउन जी। Thank you, Honorable Chairperson, for allowing the Biju Janata Dal to participate. बैठिए, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए जी। कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नथिंग, नो मिश्रा जी, पिनाकी जी, नो परमिशन इज गिवन ओनली बाय द चेयर। नो परमिशन फ्रॉम द चेयर। प्लीज पिनाकी मिश्रा जी, उनका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आपका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, प्लीज जी। Thank you, Honorable Chairperson, for allowing the Biju Janata Dal to participate in this very important debate. Firstly, let me चौबे जी, क्या बात है? आप जरा शांत रहिए, शांत कीजिए उनको शांत कीजिए। नहीं, नो चौबे जी, अरे चौबे जी, प्लीज बैठ जाइए, अपना बैठिए। ये कोई आप सम्माननीय मंत्री हैं, आपको ये व्यवहार शोभा नहीं देता है। आप बिल्कुल चुप बैठिए, बिल्कुल गलत बात है। बैठ जाइए आप मत बोलिए कुछ भी, उनको शांत कीजिए जी। ना प्लीज, आप भी बैठिए। बड़े आप वरिष्ठ सांसद हैं सब, प्लीज। मेरा समय अध्यक्ष जी अब शुरू होता है। यस, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने इतने महत्वपूर्ण बिल पे बिजू जनता दल की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया। मिस्टर चेयरपर्सन, first let me commend the House and let me commend my colleagues here who have decided to engage in a debate. And we can see straight away, once you engage in a debate on the floor of this House, how rich and enriching the debate can become and how rewarding it can become. And so therefore, this is what our party has always felt under Naveen Patnaik ji's guidance, that the idea is to deliberate, the idea is to debate, the idea is not to disrupt. I hope this healthy practice will continue for the rest of the 17th Lok Sabha. हमको सबको ये आशा है। Mr. Chairperson, some excitement has been created by the Biju Janata Dal supporting this piece of legislation, which I indicated when the legislation was placed for introduction in the House. The reason it's been done is not because we are supporting the BJP. I think Mr. Dharmendra Pradhan ji is here, Joel Oram ji is here, many of their illustrious MPs, Sarangi ji is here. They will vouchsafe for the fact that we fight a very vigorous fight with the BJP on the ground level in our state. They are our principal opposition party.
the Congress party has been wiped out of Orissa. The Congress party is reduced to some 10% vote now in Orissa, unfortunately. When I lost in 2004, I polled 46%. Today, in that seat, the Congress party has 4% vote. So that's the tragedy of the Congress party. The fact is that we are equidistant with both the BJP and the BJD. We are equidistant. We are in. The reason we support this is because we have studied the constitutional position of the power of this parliament to enact a law. 239AA of the Constitution gives this parliament a certain exclusive and plenary jurisdiction to enact laws in regard to Delhi. Everybody is talking about the Constitution Bench judgment. Yesterday, I heard one of the illustrious AAP spokesman, who's a member of parliament from the other party, wax eloquent in Urdu say of the upper house, wax eloquent and say, कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि हमारी वफा उनके साथ थी कब, जो हम बेवफा हो गए. क्यों वफा हो उनके साथ, ये भी मुझे समझ में नहीं आया. पर बात मुद्दे की ये है कि देखिए, in this issue nobody has covered themselves with glory. The Supreme Court, in the Supreme Court, specific prayer was made on behalf of the National Capital Territory of Delhi that the government has sought a stay of the NCT ordinance on the ground that it prevents the government of NCTD from meeting its popular mandate. Mr. Singhvi, learned senior counsel, has heightened instances where senior bureaucrats have ignored orders. The LG has terminated the contract of 437 consultants working with various departments of the government. I cannot understand for the life of me why 437 consultants have to be appointed at your and my expense to run certain departments here. I cannot for the life of me understand, and therefore let me say this straight away, that the government certainly has not, the government of Delhi certainly has not covered itself in glory in this regard. So therefore, to take a high moral position on this perhaps is a little unwarranted. But more importantly, a specific prayer was made to the Honorable Supreme Court to stay this ordinance. That is the prayer made. The judgment of 7 pages by the Honorable the Chief Justice referring this matter to the 5 judges bench, kindly see, of July 20th, 2023, barely a fortnight back, expressly says that IA number 130505 of 2023 seeking a stay of the NCT ordinance is dismissed. The same learned spokesperson yesterday said this borders on contempt of court, this bill. I see no contempt having been filed. Why hasn't a contempt been filed in the Supreme Court? Instead, a writ petition has been filed. The reason you cannot file a contempt in the Supreme Court is because the Supreme Court itself, as I mentioned the other day, gave the government a lifeline by saying that if you bring a new law, which Parliament certainly has the power to bring, if you bring a new law, then the position will obtain as per the new law. That new law now Parliament has brought. The Supreme Court now with 5 judges will decide whether that law is good law or bad law. The fact of the matter is that 239AA 7 into brackets B and 7 into brackets A, there is confusion and a conundrum about how they can be read harmoniously. There is no question about that. There is a substantial constitutional point involved here. The Supreme Court, therefore, is seized of that constitutional point today. If the Supreme Court is seized of that point, and that is the point that Mr. Naveen Patnaik, I think, has studied this entire position and taken a call, then to say that an ordinance will not be allowed to be translated into a bill, I'm sorry, is begging the question. Because once an ordinance has been issued, it is the duty of the government to bring it to Parliament, and it is the duty of Parliament to then ratify that if the government has the numbers. Therefore, today, yes, you can take a position politically and say, I will not support it, no difficulty. But don't say Parliament doesn't have the power. Let the Supreme Court decide whether Parliament has the power or not have the power. The moral position, as I said,
Nobody covers themselves with glory in this regard, because nobody has covered themselves with glory. But do not say that Parliament doesn't have the power. 239AA gives Delhi a peculiar and a special position in our polity. Therefore, the entire issue, for instance, this law cannot be brought with regard to Orissa or with regard to Rajasthan or with regard to Bengal. It cannot be brought because the Constitution doesn't permit you. Constitution permits you to bring this law with regard to Delhi. The government has taken a position that because of certain acts of omission or commission, or whatever, that they have decided that to put an end to it, that they will want certain fetters to be put on the government of Delhi. And the Supreme Court now will decide whether services can be included among the other three provisions which were exclusion provisions in the Constitution. So it's a pure constitutional issue. It is not a question of the BJD supporting the BJP. The BJD only supports Parliament's power to enact this piece of legislation. There is no doubt on that score. Kindly understand that. Therefore, we continue to fight the BJP as we continue to fight the Congress party in our state. And as far as the no confidence motion is concerned, when that is taken up, we will certainly give our reasons as to why we feel that the no confidence motion brought by the opposition today is perhaps not warranted again in the facts and circumstances that obtained today. We will make our position clear on that. Therefore, I, on behalf of my party and on behalf of my leader, take the advised position that Parliament has the power to enact this piece of legislation. Okay. It is under the scrutiny of the courts. Yes, we shall await the scrutiny of the courts. Perhaps this debate today ought not to be so fractious as it's made to be. Let's wait for the judgment of the court. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. श्रीमती मीनाक्षी लेखी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अपनी मुद्दे की बात कहने से पहले मुझे लगा कि दिल्ली के जो 1/4 मुख्यमंत्री हैं वो कहानियां सुनाते, तो मैं भी आज एक शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की कहानी दिल्ली की जनता को और देश की जनता को सुनाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ इस जगह पर बैठे हुए, संसद में बैठे हुए बहुत से लोग हैं शायद अनभिज्ञ हैं इस कहानी के बहुत सारे रहस्यों से, और जिसमें ये रहस्य है कि एक आम आदमी का नाम और वेशभूषा धारण करते करते कोई शीश महल में रहने वाला नवाबजादा कैसे बन गया। और वही कहानी इस बिल के मूल में है। और वो कहानी है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होकर कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, 53 करोड़ का घोटाला करके शीश महल खड़ा करता है दिल्ली के उस क्षेत्र में जहां पर आप ईंट नहीं लगा सकते। 6000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6000 करोड़ से ऊपर का बजट दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट का है। उसकी मीटिंग जब 21 तारीख को रखी जाती है तो ये नवाबजादे वहां पहुंचते नहीं, कहते हैं मैं और राजनीतिक गतिविधियों में राजस्थान में उपस्थित हूं, तो आप इसको बढ़ाइए। उसकी तारीख 23 की जाती है, 23 को भी ये वहां पर नहीं पहुंचते, फिर उसको बढ़ाकर 26 या 30 की जाती है और उसमें कहा जाता है कि मेरे जगह पर, मेरे बिहाफ पर आतिशी मरलेना इसको अटेंड करेंगी। आतिशी मरलेना जो दूसरी मंत्री हैं वो भी नहीं पहुंचती 30 तारीख को, और उस तारीख को बढ़ाकर 6 तारीख को कर दिया जाता है जब दिल्ली के अंदर कम पानी छोड़ने पर बाढ़ आ जाती है। 2 साल से दिल्ली फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, और जब 3 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई, 8-8 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा गया, तब बाढ़ नहीं आई। ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि आज जब यहां बैठे हुए लोग जिक्र करते हैं दिल्ली का, तो वो भूल जाते हैं कि दिल्ली राज्य नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा 1/4 मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले तो आधी ताकत कोर्ट ने ही मान लिया कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ऑल दीज इश्यूज विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ले दे के एक विषय बचा था जिसके ऊपर सारा झगड़ा है, सारा मामला फंसा सर्विसेज के ऊपर। और जब सर्विसेज की बात आई तो सर्विसेज क्यों आवश्यक हुई? मेरे से पूर्व में बोलने वाले मेरे अन्य दल के मित्रों ने कहा कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है।
अब अगर हम सब मानते हैं कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने निर्णय में तय किया है कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी का अधिकार रखती है, वो स्टेट नहीं है। और यूनियन टेरिटरी चाहे दिल्ली हो या पौंडीचेरी हो, सेंटर का उसमें अधिकार है। और जब विल ऑफ द पीपल की बात आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बड़ा तो विल ऑफ द पीपल कोई और रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रधानमंत्री से बड़ी विल तो एक शहर का मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट नहीं करता, जहां पर 7 सांसदों को चुनकर भी इसी दिल्ली की जनता ने भेजा है। तो जब ऐसी ऐसी मुश्किलें आती हैं दिल्ली में, मैं कोविड याद दिलाना चाहती हूं या बैठे हुए सब लोगों को, पूरे देश की रिक्वायरमेंट कोविड से पहले ऑक्सीजन की 972 मेट्रिक टन थी, पूरे देश की, जो लिक्विड ऑक्सीजन की, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए होती थी एलएमओ की। कोविड आया, भाई साहब ने एक तो अस्पताल नहीं बनाया, किसी की कोई मदद नहीं की, भोजन की व्यवस्था नहीं की, कोई काम नहीं किया। और ले देकर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल सिटी है, पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की निगाह यहां लगी रहती है, तो केंद्र सरकार को कूदना ही पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई सांसद काम नहीं करेंगे? सांसद बेचारे इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई 972 मैट्रिक टन दिल्ली के लिए बहुत अधिक है, हम इतनी सिर्फ दिल्ली को नहीं दे सकते, पूर्वोत्तर के राज्यों से जहां पर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से ऑक्सीजन को काट करके लाना दिल्ली। और आप अंदाजा लगाइए कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। क्रायोजेनिक टैंकर्स, हवाई जहाज, ट्रेन, सब कुछ लगाकर ऑक्सीजन लेकर आए और लाकर दिल्ली के बॉर्डर पे ऑक्सीजन खड़ी कर दी। बोला जी बताइए कहां भेजनी है, तो उसकी अव्यवस्था थी, इनको पता नहीं था कहां भेजनी है। और जो प्राइवेट अस्पतालों की अपनी व्यवस्था थी ऑक्सीजन लाने की, खरीदने की, उसको तहस नहस करके इन्होंने सरकारी अस्पतालों में वहां पर भेज दिया जहां पर कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की थी। दिल्ली के अंदर जब मेडिकल चीजों की व्यवस्था की बात आती है तो एम्स केंद्र सरकार चलाती है, सफदरजंग केंद्र सरकार चलाती है, लेडी हार्डिंग, लेडी इरविन सब केंद्र सरकार चलाती है। कई लाख करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार करती है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय करता है। जब इनको कहा गया G20 है, सड़कें ठीक कर लो, तो कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे। 700 करोड़ रुपया रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दिल्ली को दिया है। तो अब आप पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर केंद्र का हस्तक्षेप कैसे? दिल्ली के अंदर केंद्र के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली चल ही नहीं सकती, क्योंकि शीश महल में रहने वाले नवाबजादे ने 13,500 करोड़ रुपया सिर्फ होर्डिंग पोस्टर के ऊपर खर्च करना तय किया है। और इसलिए ये बिल लाना पड़ा, और ये बिल लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली की जनता जवाब हमसे मांगती है। आप जैसों के घर में जब पानी भर जाता है तो आप भी एनडीएमसी को फोन लगाते हैं, दिल्ली सरकार को फोन नहीं लगाते। 70,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में होता है तो उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी। इस एक्ट के, इस बिल के मूल में जो भावना है वो भावना यही है कि एक व्यक्ति, सबने जिम्मेवारियों की और तमाम चीजों की बात की, एक व्यक्ति नवाबजादा बन गया है आम आदमी कहते कहते, और वो भूल गया है कि चुने हुए नेता, चाहे कॉरपोरेटर हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए हो, चाहे एमपीज हो, सबकी जवाबदेही अपने लोकतंत्र में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति है। और यहां पर अपनी सब चीजों से हाथ जोड़कर कह देना कि भैया केंद्र की सरकार काम नहीं करने देना चाहती, हम तो करना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जैसे इससे पहले मेरे कई मित्रों ने कई सारे उदाहरण दिए हैं, मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगी, पर एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इनके पास 400 करोड़ रुपया नहीं है, तो कौन काम नहीं करने दे रहा? एक तरफ कहते हैं हमने इतने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, केंद्र सरकार के खड़े हुए कॉलेजेस और स्कूल्स वो केंद्र सरकार ने बना के दिए। 300 500 करोड़ केंद्र सरकार ने लगाया, जाके अपनी फट्टी टांग के आ जाते हैं। तो अब ये सब अगर केंद्र सरकार करेगी तो काम करवाने का अधिकार भी उसके पास है। और इसके मूल में असली कहानी शीश महल की कहानी है। असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है। असली कहानी है कि बिना, आप बताइए, मुझे नहीं मालूम, सबको बहुत एक्सपीरियंस है, वैसे राज्य सरकारें चलाई हैं, और जब ये लोग मोरालिटी की बात करते हैं
तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 90 बार 356 को इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। नहीं, नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात है। एक मिनट, सर, मैं जो कहना चाहती हूँ, टूल्स ऑफ गवर्नेंस कि यहां पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी। आप गुंडागर्दी करते रहेंगे। दिल्ली के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है तो राइट्स करेंगे और पुलिस काम नहीं करेगी। क्या ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं? अल्टीमेटली ये सब टूल्स ऑफ गवर्नेंस हैं और टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस अगर इस्तेमाल नहीं होते इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि ये टूल्स आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। और आज जब दिल्ली की बात आती है, जब इस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट की बात आती है, तो मैं इस इनैक्टमेंट में एक चीज याद दिलाना चाह रही हूं, क्योंकि मैंने कहानी शुरू की थी शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की। तो शीश महल में रहने वाले नवाबजादे कहा कि 370 पेज मेरे पास हैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो वो 370 पेज तो खो गए। उन 370 पेज का तो हिसाब किताब कहीं आया नहीं। और आज विडंबना देखिए, उन्हीं के हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, उन्हीं के साथ अलायंस की जा रही है, उन्हीं के साथ गठबंधन किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार को कैसे रोकने की बजाय कैसे बढ़ावा मिलता रहे। और कानूनी व्यवस्था, और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बीमारी होती है तो थोड़ा लाचार कर देती है, पर लाइलाज तो नहीं होती। इसी तरीके से संविधान के अंदर लाइलाज कुछ भी नहीं है। अगर बीमारी पैदा होगी तो उसका इलाज भी होगा। और खास तौर पे दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेंगू की बीमारी फैलाने का काम किया, कोरोना की बीमारी फैलाने का काम किया, काम नहीं करने का काम किया, इलाज तो होगा ना उसका भी। और ये उसी का इलाज है। आप अंदाजा लगाइए, मैं बाढ़ की बात बार बार लेके आ रही हूं। बाढ़ की बात में 6,500 करोड़ रुपया फ्लड डिपार्टमेंट का खर्च हो जाता है। 250-260 लोग उसमें काम करते हैं। और जब बात की जाती है तो हरियाणा ने नहीं किया, उसके बीच पंजाब आता नहीं, हिमाचल ने काम नहीं किया, बाकी सबने काम नहीं किया। ये बहुत खास है, इन्होंने काम किया। और फाइनली जब उसमें मिलिट्री को एंगेज करना पड़ता है, आर्मी को लाना पड़ता है, आर्मी के गोताखोर लगते हैं, तो लास्ट लाइन पहले होता है 20 घंटे लगातार काम करने के बाद में आज वो बराज के गेट खुले और वो बराज के गेटों से सक्शन पंप लगा के, कंप्रेसर लगा के हमने सिल्ट को हटाया। तो भाई सिल्ट कलेक्ट कैसे हुई जब 6,500 खर्च हो गया, ये तो समझा दो। और मिलिट्री के गोताखारों को बाद में धन्यवाद। आप 20 घंटे ऐसे पढ़ के लगता है कि जैसे 20 घंटे यही गोता लगा रहे थे पानी में। तो यही कारण है कि इस एक्ट को लाना पड़ा। और सर्विसेज में जब लेके आए तो सर्विसेज में लाने के पीछे, हाँ मैं इससे पहले अपने मेरे कुछ मित्रों ने कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूं। इन्होंने कहा कि ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, मिलिशियस लेजिस्लेशन है। तो जिन्होंने ये दो शब्द यूज किए हैं, टारगेटेड और मिलिशियस, मैं उनको बताना चाहती हूं कि ये पर्पसफुल लेजिस्लेशन है। और वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है लेजिस्लेशन को बनाते हुए कि फॉर अचीविंग द पर्पस। एंड व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस between domestic politics or domestic needs and national needs, because Delhi is a capital city where balance needs to be kept between the local as well as national and international requirements, because we are a capital city. So it is a purposeful legislation to achieve the balance between two methods of governance. The second aspect has been that throughout there have been misstatements by lawyers, by practicing lawyers, by repeatedly saying that India is a federal structure. Either they have not read or they are misleading. I will go by the second, that they are misleading, misstating and misquoting.
India is a quasi-federal structure, which is what Constitution demarcates. India is not federal. The center will always have a primacy, otherwise to govern a complicated state, as complicated as India is, as diverse as India is, will not be possible. That's why the Parliament of India, the central government of India has been given the primacy even in the Constitution, and this Parliament has every business, every right to correct the wrong and bring the right law. The next thing, concept of states will be power and responsibility. I'm purposely addressing what the argument have come from the other side. So power and responsibility. I would say if a person, by whichever method, has come to power and becomes irresponsible, will the parliament, I'm so sure, will of the people, we have also seen ballots being rigged. So don't tell me whichever you don't understand. We also understand how panchayat elections have been conducted in West Bengal. So don't tell me all this. I think people of this country are mature enough. So when power vests with people who act irresponsibly, will this parliament not have the power to correct that wrong and tell people what their responsibility is, to make people answerable to the very people who have elected you? So the answer is power and responsibility. The balance needs to be struck, and that balance is what this legislation is seeking to address. Unaccountable, irresponsible. I mean, these are the words used. So I would go by that somehow the power structure in Delhi has been unaccountable and irresponsible by the manner in which the neutral bureaucracy has been dealt with. I do not know, I mean, I can only quote a great example of our own Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat, and we know how all kinds of cases, fake cases, etc. were made, and how those chief secretaries used to be appointed by the central government. Did they beat them up? Did they take them to a corner? Did they assault them? Answer is no. You don't do that. You battle it out in the court of law. You battle it out by the method which is prescribed by law. But here the chief secretary, here the bureaucracy had been put under immense pressure to do the wrong. Arvind Kumar, a person, a bureaucrat working with the office of Deputy CM, is a witness in the case of शराब घोटाला. शराब घोटाले में गवाही उसकी है कि किस तरीके से कोने में ले जाकर प्रेशर किया जाता था, गलत काम करवाए जाते थे. उसका क्या कोई इलाज नहीं निकलेगा कि आप गलत काम करवाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे? अभी पिनाकी जी ने पढ़ के बताया, जजमेंट में एक्साइटेड है. 400 से ऊपर लोगों को आपने बिना सर्विस कमीशन के, स्टेट सर्विस कमीशन होता है, सेंट्रल सर्विस कमीशन होता है, बिना सर्विस कमीशन के, बिना वैकेंसी निकाले, बिना कुछ किए अपने रिश्तेदारों को 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी दे दी. बाकी लोग क्या करेंगे जी? इस देश में इतने लोग बैठे हैं जिनको नौकरियां चाहिए, काम चाहिए. आप अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे? उसका इलाज है. और एक सवाल इन्होंने किया, 3 साल 10 साल, अरे एक्सटेंशन, क्योंकि वो आपके आदरणीय अध्यक्ष जी 370 पेज का नाम इन्होंने लिया था शीला जी के खिलाफ. जिस तरीके के घोटाले इन्होंने किए हैं वह 3-5 हजार पेज हैं. वो 3-5 हजार पेज के लिए उसको एक्सटेंशन देनी पड़ती है क्योंकि इतने मोटे मोटे घोटाले किए हैं. नाउ कमिंग टू द मीट ऑफ द मैटर, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, try to conclude also. Please sir, I will. So the state's reorganization, which was brought in 1956, several changes have come, and finality is 2023, where Supreme Court gives control over services to Delhi government, and then ordinance was brought, and now people are saying, why was ordinance brought? Because act could have been brought, bill could have been brought. There was a gap of about 6-7 months, 5-3 months. So my point is,
within less than 24 hours. When the Sheesh Mahal Ghotala was being investigated by the Vigilance Department, that not just that officer, 70-80 officers were transferred overnight. Now these are the officers which were investigating the scam. And because they were investigating the scam, overnight, they tried to circumvent the scheme of governance and transfer those officers. Thus, there was a need to bring in an ordinance. And after bringing an ordinance, the bill has been brought in. And this bill has been brought in to correct the status. So the statutorily, so why was this brought in? This bill has been brought in to statutorily balance the interest of nation with the interest of Union Territory of Delhi in administration of the capital by giving purposeful meaning to the manifestation of democratic will of the people reposed both in the central government as well as GNCTD, that is National Capital Territory region of Delhi. So, by virtue of this, what has really happened is that a particular body, National Capital Civil Services Authority, has been established. And this National Capital Civil Services Authority will have 3 members. Chief Minister, who is not just the Chief Minister, but also the presiding officer of this committee, of this authority. Will have a member secretary, who's a member secretary of Home Secretary of the state of Union Territory of Delhi is going to be the member secretary. Then Chief Secretary of Delhi, because he's the principal officer dealing with administrative issues. What can it do? It can deal with transfers, postings of officials and disciplinary matters. Sole discretion on several matters, including those related to National Capital Civil Services, summoning, prorogation, dissolution of Delhi Legislative Assembly. This is all what has happened. Now, being the capital of Delhi, being the capital of India, Delhi had been administered by the President of India directly earlier. And a sui generis status was, however, conferred on Delhi, whereby it retained the Union Territory nature and with a legislature. A lot has been quoted on 239A, entry 43, list 2. Now the judgment, which has been off-quoted, I'm reading that part. So judgment says, in the absence, and I'm sure people familiar with legal procedures know that any judgment records whole kinds of arguments and all kinds of facts, and then it gives certain specific subject matter related statements. So where it says, in absence of any specific parliamentary legislation dealing with the subject of services as contained in entry 41 of list 2 of the 7th schedule specifically and in detail, the Honorable Supreme Court was pleased to pass a judgment on such and such date, and whereas in view of its special status as a national capital, a scheme of administration has to be formulated by parliamentary law to balance both local and national democratic interests which are at stake, which would reflect the aspirations of the people through joint and collective responsibility of both the government of India and government of National Capital Territory of Delhi. So this statutory balance the interest of nation with interest of Union Territory will give purposeful meaning to the manifestation of democratic will. Our constitution, the formation of Delhi as a union territory is unique in itself. It may be remembered that every union territory is administered by the president acting through an administrator, and while any UT may have an elected body, it does not diminish the supreme control of the president and the parliament over them as per the constitutional scheme.
आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर इस मामले में जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं और या जो दानिक्स हैं, उनके ऊपर पोस्टिंग और इन सब चीजों का अधिकार जो है वो केंद्र का है, सेंट्रल सर्विसेज। और उसके अलावा जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, बाकी जो चीजें हैं, उसके ऊपर जो बॉडी रहेगी वो ओवरसी करेगी। इनके अपॉइंटमेंट्स वैसे होंगे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा और उनका वर्ड जो है वो सर्वोपरि होगा, ओनली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अदरवाइज रायशुमारी से ये काम होगा, और रायशुमारी करने में कोई बुराई नहीं है जी। दैट इज व्हाट बैलेंस इज ऑल अबाउट, एंड दिस बैलेंस ऑफ पावर टू गिव जिम्मेवारी एंड टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट दिस लेजिस्लेशन इज ऑल अबाउट। अंत में मैं एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं, और वो बात है कि जिस तरीके से इन्होंने ये तमाम चीजें की हैं, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस, तो ऐसे में अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जिनको इन्होंने चौकीदार का नाम दिया था, तो जो चौकीदार की सरकार है वो चौकीदार तो चौकीदारी पूरी करेंगे और नवाब को भी जवाब तो देना ही पड़ेगा और जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। थैंक यू। श्री रंजीत रेड्डी जी। Thank you very much, sir, for providing me this opportunity to speak on a very important and crucial bill which impacts the federal structure of this country. And I feel this is a leitmotif of the Honorable Prime Minister of this country, the democratic values of the democracy, which is considered to be the largest in the world. I, on behalf of my party, strongly oppose the bill, lock, stock and barrel. Sir, Abhi, the fight is very open. The discussions are going on since very long. The topic of discussion is what will happen to the Delhi bureaucracy? Whom should they report to? What is their responsibility? Whose accountability is this? Ye dekhe to, my earlier speakers were talking very high about the responsibilities of the National Capital Civil Services Authority, and उन्होंने बोल रही थी हम जवाबदार है public के लिए. What has happened to the government elected by the people? No one talks about that. They talk, the Kejriwal government is not doing anything. Let us not talk on all those things. Who was elected to be seated there? That is very important, sir. When the democracy, such a largest democracy, आज का दिन क्या हो रहा सब? जिसकी लाठी है उसकी बैंस है. That is where it is ending up. So when we talk about the responsibilities, हमारे पास एक blockbuster का movie आया था, RRR. So there were two heroic performances by two important heroes, Ram Charan and Rama Rao. This was directed by a sensational director with his creative skills by name Rajmouli. A 3 hours itna important hai, yeah, this is related to this issue also. Because what has happened here, generally in a governance, what happens, the bureaucrats are responsible to the cabinet of ministers and the chief minister. The cabinet of ministers, this is the first hour. The second hour says that the cabinet of ministers and the honorable chief minister are accountable to the state assembly. And the final hour, the state assembly is answerable to the people. So the Oscar-winning movie, because of the dance sequence of Natu Natu between the two heroes, that is what is going to happen in this situation, sir. So it has to be a Natu Natu between the chief minister of Delhi and the home minister, directed by the prime minister. Is that what has to happen, sir? No, this is what is going to happen now, finally. The earlier speakers were speaking so much about all these things. The people are matured enough to what is happening in the country. We will be happy if the people are matured enough and see what is happening in the country, sir. So finally, the Delhi bureaucracy has to report to whom is very important. If they have to report to the LG, who is non-elected, or reported to the people-elected governance. This is what has to be decided today, sir. Because when the Honorable Home Minister was talking about the convenience of the judgment, he says, "Oh, taro acha padna tha." Acha hi padte, sir. Sab log acha padte. What exactly the opposition is raising? Let them answer for that also. The clause 239AA clearly says, as per the Constitution, the Legislative Assembly shall have the power to make laws whole or part of the NCT, which is inclusive of what state subject and the concurrent list also.
when the services are removed, what will happen, sir? हम तो गठबंधन में पार्ट नहीं होता, होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे. We are not part of गठबंधन, but I am telling you, the center we can understand has overriding powers, but these overriding powers have to be used how, sir? Rationally, ethically, democratically, and morally also. How ethically and morally, 100% this is against the 239 AA, sir. This is not only applicable to a Delhi governance, sir. It is applicable to all the states where the opposition parties are there. What has happened to Jammu and Kashmir? The unitary, it was reduced to UT because of some other reasons. But elected government was demolished also. So we are not against the ordinances. Ordinances have to be moved. This government has moved 80, they have promulgated 80 ordinances. But no ordinance should violate the fundamental federal and democratic values of the governance, sir. If the bureaucracy has to report it a non-elected person, what should the elected government do? That is finally what is happening here. And as Lekiji was saying, that they have created an authority, National Capital Civil Services Authority. Very good. It is headed by the 3 members. We understand. As the other MPs spoke, it is a matter of the majority. When 2 of them are controlled by the center, what can the Chief Minister do there? And this authority will recommend for the postings, for the transfers, for the disciplinary matters of all the bureaucrats. When they can do that, she cannot disturb us. We have not disturbed her also. We have not disturbed her, sir. I am not yielding, sir. Sir, I am not yielding, sir. We have not disturbed her also. When the authority, no, sir. I am not yielding, sir. Why should we yield, sir? When the authority can recommend everything and when the LG can take a call on that, what is the role of the authority? What is the role of the Chief Minister there? It is the LG who decides what exactly has to happen. What is happening? The ordinance is just spoken about and the things are happening in Delhi, sir. The State Vigilance Minister was saying that. And in some other department also, what is happening? A case was fought. Thank you. Sir, 2 minutes, sir. कीजिए. There are so many authorities. There are 50 authorities which are controlled by the central government. What is the elected government meant for, sir? All these authorities, let it be water regulatory, transport, tourism, jail board, all these are controlled. And these secretaries have started behaving funnily. They would want to report only to the LG, not to the concerned ministers. If this continues, what will happen, sir? Even there is a wording of Supreme Court also, 2018 and 23, which is against this. They clearly says that the LG does not have any independent decision-making power. So if we can draw lines wherever we want, and if we don't want the lines to be drawn, what can the government do, sir? No, this is not the way to do. I honorably request the Home Minister to please retrieve this thing and reconsider and withdraw the bill. We on behalf of my party strongly oppose the bill, sir. Thank you. Shrimati Supriya Sule ji. Thank you, sir. I stand here to oppose the bill brought by the Honorable Home Minister. So the bill is about elected versus the selected. India's a democracy, not a dictatorship as yet. So how an elected government is being demeaned and is going to be run by the selected is my humble question to this government of India right now. The bill is completely undemocratic, unconstitutional, and it's completely against the spirit of cooperative federalism. My learned friend Meenakshi Lekhi has just left. She was talking about cooperative federalism and talking about control. I was surprised that in a democracy there's control. So I was slightly confused because these kind of committees are only in countries like China. I don't think India has this kind of control because I still believe it's a democracy. And while she was talking and running down cooperative federalism, I would like to remind her from the BJP, the Honorable Arun Jaitley ji, who I really miss in this house, always eloquently talked about cooperative federalism and how much they wanted to work with the states and empower states, and that's the beauty of India. And she was talking completely against what the BJP original, or maybe this is 2.0, has a different view. I think I need to know the clarification. I don't know whether it's a generation gap. But in a democracy, control is not the right word. It's a dictatorship which is the right word. The other thing which I wanted to ask her, she was talking in her speech that it's not a full state. I want to very humbly submit to the BJP and ask them,
in their manifesto, every Delhi election, the BJP has always asked for a full statehood of Delhi. If I'm wrong, I stand corrected. Anybody can challenge me on this. I'm willing to take my speech back. So when you're talking about a full statehood, so were you lying in the manifesto? Are you lying to the people in Parliament? Parliament is supreme. The Honorable Prime Minister calls it the temple of democracy. So how dare you lie in a temple of democracy? Or are you lying? Then stand up and admit कि हमने जो मैनिफेस्टो में रोका वो झूठ था, हमको ये नहीं था और एक जुमला था और हम माफी चाहते हैं इस देश को. They have to apologize to the government because they have lied to the nation. I want a clear clarification from the Honorable M Minister. Another small question. When they talk about full statehood, sir, in the manifesto, they are talking about full statehood for BJP. I want a clarification from the BJP. Then they are saying Jammu Kashmir, which was a full state, you have broken it into 3 states and for 4 into UTs, and they have not had an elections for 4 years. Standing right here, I have clapped for the Honorable Home Minister when he said, "एक साल में election लूंगा." We had all supported him and clapped for him. 4 साल हो गए सर, जम्मू कश्मीर में आज तक इलेक्शन नहीं. पूरे स्टेट को आपके तोड़ के 3 UTs बनाए और 1 UT का पावर जिसको आप चाहते थे, बीजेपी चाहती थी कि फुल स्टेट हो. So what is this double-faced all the time policy making of the BJP is my clear question to them. They must answer. There are 2 more questions I want to ask technically, which my friend Pinaki Mishra, I think, is just left. I want to ask this question because the Honorable Home Minister talked about it. He said in Article 239AA7 empowers the Parliament to make a law to supplement the provision contained in Article not to violate. And he, in this same reference, said that this will have to go back to the Supreme Court, which is 3 kilometers away. If it's going to get back and there is ambiguity in it, then why are we discussing this and wasting our time? So this is a clarification government share because the Honorable Home Minister also talked about 239AA7 and so did Pinaki Mishra, who's supporting this, but still saying it will go back because there's ambiguity. So then what is the importance and relevance of Parliament? Can we get a clear clarification because it's confusing all of us? Another point about the same thing about Article 239AA. It says in Parliament does not enjoy concurrent powers of lawmaking at the issue services under the entry 41 list 2, but no exercise of concurrent powers allows the Parliament to withdraw the same power from the Delhi government. What does this mean, sir? It's a complete contradiction. So if what we are discussing is going to get struck down, whose ego are we pandering here? Who are we intimidating here is my question to this government. Another few questions I want to ask. They talked about Delhi Services Authority. Delhi Service Authority, I have 3 questions. This is similar to the China model, sir. In clause 45D, my question to them is the committees of 3 people. Majority wins so far in a democracy, unless it will change to a dictatorship. I'm not sure. By the way, the people in the power are intimidating us all the time. But we want to ask them, mother of democracy. My question to them is that if there are 3 people and majority wins, 2 secretaries versus 1 chief minister. So if the elected chief minister, who is elected by the people of Delhi, is vetoed by 2 secretaries, then what happened? Appointed will decide. So selected versus appointed. See, there you go. Appointed. My second question to the government is, so will the chief minister be rejected? My first question. My second question is, will the 2 officers overturn the power of a chief minister? Is my question to this government. One more question. Can the LG rule what the Honorable Chief Minister has decided? He can overrule. What is this? So then that leaves the government powerless. Then why have a government in Delhi? Is this what the final agenda is? So this is my clear 3 questions to... No, 2 small questions which I really need a clarification. Just 2 minutes, sir. See, बड़ी विनम्रता से मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, बड़ी विनम्रता से. They talked about morality, which is a good thing. Morality तो होनी चाहिए. और हमेशा बीजेपी हमको कहती है 2014 और 19 में डंके की चोट पे हमको जनादेश दिया था. अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ डेमोक्रेसी. आप जीते, हमारे हम मानते. फिर केजरीवाल जी को 1 रूल और इनको 1 रूल, ऐसे कैसे? अगर इस देश के, इस दिल्ली ने जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल को दिया है तो वो गलत है, लेकिन इनको जनादेश जब मिलता है वो पॉपुलैरिटी है. ये कौन सा न्याय होगा? इट्स रियली अनफेयर, सर. तो ये लोकतंत्र है. ये कहते हैं केजरीवाल जी को दिल्ली भी मिली
और पंजाब भी मिला, हाँ मिला, बट लोकतंत्र है ये सर. So whether you like it or not, today, whether anybody likes it or not, today Punjab and Delhi is ruled by Aam Aadmi Party and not by rigging any election. And if Meenakshi Lekhi ji said rig or election, then what was your government doing? You're saying Punjab was rigged? Was Delhi rigged? Is my question to the government. I want to ask that. Sir Amaladi, ये नैतिकता की बात कर रहे थे. इनका लीड स्पीकर नैतिकता की बात कर रहा था. What was he saying नैतिकता? I didn't disturb anybody. नैतिकता की बात हो रही थी. इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो सेक्रेटरी है उनको पकड़ के मारा. सही है बात. Absolutely I agree with her. गलत है. Two wrongs don't make a right. So let's unanimously say कि अगर गलती हो गई है किसी भी राज्य में, अगर दिल्ली की सरकार ने किसी चीफ सेक्रेटरी को बांधा है वो गलत है. I agree with you Meenakshi, it is wrong. But then please tell the Maharashtra government where your 105 MLAs are there, वहाँ 3 लोगों ने, एक बीजेपी के एमएलए ने एक अधिकारी को थप्पड़ मारा, एक बीजेपी एमएलए ने उसको बांधा और एक इनके एमपी जो इनका है उन्होंने भी एक थप्पड़ मारा अधिकारी को. सो अगर दिल्ली में भी गलत है तो महाराष्ट्र में भी गलत है. सो व्हाई कांट बी यूनानिमसली पास दिस? सर एलिगेशन कांट बी वन वे. सर गठबंधन की बात, 2 वेरी स्मॉल पॉइंट. उन्होंने गठबंधन की बात की. आई हैव नो प्रॉब्लम. लोकतंत्र में कोई भी गठबंधन करता है. इनको बहुत शौक है 2 चीजों को बोलने का. एक बड़े संक्षेप में कर दूंगी और बड़ी विनम्रता से सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ. चेक्स एंड बैलेंसेस इन आवर डेमोक्रेसी सर. इन्हें कहते हैं परिवारवाद. मानती हूँ मैं तो परिवार का प्रोडक्ट हूँ ही. मुझे बहुत अभिमान है जिसकी बेटी हूँ मैं प्रतिभा शरद पवार की बेटी हूँ और मुझे उसका बहुत अभिमान है. लेकिन एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन पूछ रही थी कि हमारा परिवार को मेरिट है ही नहीं. लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होती है उसमें जी के वासन जी, चिराग पासवान जी, कॉनरेड संगमा जी, प्रफुल्ल पटेल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ये शायद परिवार नहीं, हम सिर्फ परिवार. वो सब मेरिट और हम सब परिवार. ये थोड़ा सा हम पे अन्याय हो रहा है. जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट. एंड देन अनदर थिंग, सिलेक्टिव एमनीसिया होता है सर. और इनके एमएलए, एमपी, मंत्री सारे पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी वहां चल जाती है. हम करें तो प्रॉब्लम और नहीं. और अनदर थिंग व्हाट दे सेड, दिस नीड्स टू कम ऑन रिकॉर्ड सर. वेरी स्मॉल पॉइंट विच माई फ्रेंड दयानिधि मारन से एनसीपी, इन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी हम सबको चोर कहती थी. ठीक है उन्होंने कहा, बट ये भी कहते थे, मुझे याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी इस देश में कौन है तो वो एनसीपी है. ये इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके किया था. So can I get a clarification from this government? Now they are in government with them. So take their word back. Nationalist Congress Party, it is not a naturally corrupt party. इसका जवाब इस सरकार ने देना चाहिए. And I want to clarify that it doesn't work. So when we are against you, we are bad. Okay, when we join you, we are good. ऐसा नहीं होता. Dr. S.T. Hasan ji. Democratic system, I stand here opposing this. They are intimidating people. This will not happen. This country has always fought against intimidacy. We will fight it and we will win this game. Thank you, sir. थैंक यू सर. जी सर, हम तो ये समझते थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हम ब्यूरोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं. लेकिन एक मिनट क्या पॉइंट ऑफ 57 एक सेकंड जी. 357 जी 357 कहता है कि आप यदि किसी मेंबर का नाम लेते हैं तो उसको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अधिकार है. मीनाक्षी लेखी जी का उन्होंने नाम लिया है, आप कृपया उनको इजाजत नहीं. वो कह रही है क्या वो बोलने को नहीं, अधिकार तो है लेकिन वो मैंने एक सेकंड मैंने उनसे पूछा, बैठिए निशिकांत जी बैठिए, मैंने उनसे पूछा आप कुछ कहेंगी, मैंने इशारे में पूछा. प्लीज सर बोलिए. सर मैंने जो बात कही थी, मैंने कहा था चुनाव कैसे जीता. मतलब झूठे वायदे एक उसमें हो सकता है. रिगिंग वाली बात जो थी उसका मैंने पंचायत वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिया था, वो उदाहरण दिया था मैंने. लेकिन इन्होंने मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास किया, तो इसलिए ये क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि झूठे वायदे की बिजली माफ और पानी हाफ, वो पानी माफ और बिजली हाफ, वो भी दिल्ली देख रही है, वो सब भी दिल्ली देख रही है और इसी कारण से वो जीते हैं. जी. अपने वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए. और जहां तक
गिरगिट की कहानी में एक कैमियो रोल रह गया, वो है गिरगिट का। तो आज गिरगिट कह रहा था कि मैं चुल्लू पर पानी में डूबना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कुर्सी के लिए एक शहर के आधे राज्य के 1/4 मुख्यमंत्री क्लेम कर रहे हैं। ओके नाउ डॉक्टर हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम तो ये समझते थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी सरकार ने इसको ब्यूरोक्रेटिक कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, मेरा अपने साथियों से ये सवाल है, क्या आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के फेवर में हैं या नहीं है? मंत्री जी मुझे बताने का कष्ट करें। हमारी देश की राजनीति के बहुत बड़े लीजेंड श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या ख्याल था इस बारे में आप सबको पता है। वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के फेवर में थे। आज आप क्यों इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आपने कम कर दिया, डिफ्यूज करना शुरू कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स पे हावी कर दिया। ब्यूरोक्रेट्स का होना तो ये चाहिए था जैसे कि मेयर नगर आयुक्त का सीआर लिखता है, उसी तरह से हम सारे सांसद और विधायक अपने यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का गोपनीय रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी, ताकि इन पे कंट्रोल लें। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर को भी एलजी का और राज्यपाल का सीआर लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घोटालों की बात कर रहे हैं, घोटाले कम से कम ये आपके मुंह से शोभा नहीं देते। आपने तो इन 9 सालों में घोटालों का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अडानी से लेकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी तक हम कौन कौन से घोटाले गिनाए? आपने कौन कौन से घोटाले गिनाए? अडानी पे क्यों बेचैन हो रहे हैं भाई? सर, हर घोटाले की जांच होनी चाहिए। हमारे पास एजेंसीज हैं, जो भी घोटाला कर रहा है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन सर, इस तरह से अगर आप इसको पूर्ण राज्य देने का दर्जा नहीं देना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन क्यों कराते हैं? बंद करिए इलेक्शन, ये क्यों ड्रामा चल रहा है? और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं तो पूरा अधिकार दिए चीफ मिनिस्टर को कि ठीक से वह गवर्नेंस कर सके, वरना ये अधिकारी किसी को कुछ करने नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Chairman. I am rising on behalf of my party to strongly oppose the government of the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Let me make it clear at the outset that this bill is no ordinary piece of legislation. It represents a grave chapter in the history of the Indian Republic, seeking to ratify an ordinance that in many ways is an assault on our democratic heritage and the spirit of federalism. During the introduction of the bill itself, sir, I had filed a motion strongly opposing its very introduction in this House at a time when a motion of no confidence is pending for discussion. In fact, the Bhagavad Gita of Parliamentary Practice and Procedure, Call and Shaktar, page 772, explicitly states, when the leave of the House to the moving of a motion of no confidence has been granted, no substantive motion on policy matters is to be brought before the House by the government till the motion of no confidence is disposed of. Sir, in 27 no confidence motions brought since independence to this House, no bills were debated and passed before this government did so with 2 bills in 2018. Therefore, such an improper introduction of a substantive policy change while a no-confidence motion is pending is against democratic morality, to use a word much favoured by the Treasury benches. Let me remind my colleagues in this House that it was almost 4 years ago exactly when this government unceremoniously passed a bill that sealed the fate of a state government practically overnight, in the rampant disregard for the basic constitutional relationship of the people of Jammu and Kashmir to the Republic of India. Without consulting them or their elected representatives, this government showcased the same attitude that we are seeing today. A breathtaking betrayal of our democratic political traditions, culture, and utter contempt for the people of the state and of the value of the political representation that these citizens of India give themselves through elections.
4 years later, we're back in the House with a government that is clearly bringing the same attitude to our national capital. We saw when the Home Minister spoke. Sir, I'm sorry, I'm not yielding. I'm not yielding. Point of order में yielding की बात नहीं होती. Point of order is point of order. Please, This is my right. Listen. No. It is yield or not. This is my right. Yes, ridiculous. Yes, it is right of the House. 52-1. जी. 52-1. अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा सर. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का उसको रोज सुन रहा है और उसके बारे में इन्होंने बिना कुछ कहे हुए अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया. Sir, I am referring to something that happened in this House 4 years ago. Okay. It's a ridiculous point of order, sir. Now, the Home Minister, in introducing this bill, attempted to invoke Nehruji in his support. And I think that the expression that my friend Dayanidhi Maran was quoting in Tamil was that the devil can quote scripture for his own purposes. The truth is that times change, sir. Times change, and with that, facts change as well. There were no elected representatives for Delhi in an assembly in those days, sir. We were talking about a different Delhi and we were talking about a different India. Today, 75 years have happened since independence, 76. In any case, I have to say to my dear friends in the Treasury benches, you oppose everything Nehru said, you oppose everything Nehru stood for, so why not this one too? Oppose him saying that Delhi should be under the central government. That will be the end of the conversation. They also went on about alliance politics, but let me stress, Mr. Chairman, this is not about alliance politics. This is about a principle. And the principle is that the Democratic and Federal Republic of India finds a grave shadow cast upon it today, sir. The Union of States, so original and aspirational in its genesis, faces a crisis of the federal division of powers. We saw the Minister of State for External Affairs choosing to intervene on internal affairs. Fine, that's your party's prerogative. But the fact is that she asserted that India is not federal. She said it 3 times. Why then do we have a state list, a concurrent list, a union list? Because we are federal. I'm sorry, ma'am, I'm not yielding. I'm sorry. I'm responding to a debate, to a point made in a debate. I have every right to do so, sir. Why does the government and the Prime Minister speak of cooperative federalism if she is right and we are not federal? Obviously, the government wants to sing the virtues of cooperative federalism, but in stark contrast to that, we see the ruling party impinging upon the sovereign domain of the states, from vacillating on GST dues and Munrega payments to states, to bulldozing through laws and subjects from the state list. A blatant subversion of the constitutional separation of powers is taking place again today through this bill. The difference is that this time around, the Honourable Supreme Court was loud, clear and unequivocal, and the government seems determined to ignore it. Let me set out before the House the 3 dangerous prongs of this amendment, sir. It removes services from the legislative competence of the Delhi Legislative Assembly. In other words, it amends the Constitution without being a Constituent Assembly, a constitutional amendment bill. Second, it establishes this National Capital Civil Services Authority, consisting, as everyone has pointed out, of the Chief Minister, Chief Secretary, Principal Home Secretary. Now, the authority in which the elected CM can be outvoted by the other 2 can even convene on the basis of quorum of 2. So even without the CM, the 2 officials can get together and decide anything they like, sir. They can make then recommendations to the Lieutenant Governor regarding transfers, postings, officials, disciplinary matters, and bureaucrats are going to henceforth exercise authority that voters have given to their elected public representatives. If BJP was in power in Delhi, sir, would they have accepted this? It seems the case of where you stand depends on where you sit. Now, third point, sir. The bill empowers the Lieutenant Governor to exercise his sole discretion on several matters, including those related to this civil services, the summoning, prorogation and dissolution of the Delhi Legislative Assembly. So this implies that the elected Chief Minister may even be unable to convene a session needed for essential government business. The LG can overrule him. Even a unanimous decision of this authority can be overruled by the LG. He can define the powers and duties of the officers of the Delhi government, superseding the ministers. Now, sir, executive lawmaking through an ordinance, as the Supreme Court held in DC Wadhwa 1987, is only to meet an extraordinary situation and cannot be perverted to serve political ends, quote unquote, from the Supreme Court. But the government's arguments even today were all political, sir.
And what is interesting is it has intervened on political grounds in a brazen manner. Most crucially, they have added this subject of the exemption of services to the existing exemptions in the Constitution, land, public order and police, under Article 239AA, which everyone has been citing. To do it without amending the Constitution, which requires a two-thirds majority and a different process, is an act of constitutional subterfuge, sir. Now, how ironic that when the Supreme Court has said that there is a complete breakdown of constitutional machinery in Manipur, you don't want to discuss it. But when you want to amend the constitutional machinery when it is functioning in working order in Delhi without admitting it. What kind of contradiction this is, sir? Now, is an ordinance or a bill even constitutionally permissible when the very framework of the Constitution's basic structure is being altered? Article 239AA provides the Delhi Legislative Assembly with powers to make laws on subjects in the state list and the concurrent list, barring police, public order and land. Agreed. Parliament, of course, their rights can legislate on subjects under the state list with respect to Delhi, but the bill specifies that the Delhi Legislative Assembly will not have the power to legislate on the subject of services, which actually comes under the state list. So by doing so, the bill effectively expands the subjects that the Delhi Assembly cannot legislate on, and therefore is changing the constitutional framework. Under Article 368 of the Constitution, a constitutional amendment has to be initiated for such an action. So I ask you, Mr. Chairman, sir, how can you admit this bill except under the rubric of a constitutional amendment bill? It just seems to me, sir, this is completely out of order in terms of the procedures of this House. Now, let me take you back to what the Court has said in its judgment of May 2023. The Supreme Court has argued that democratic government rests on a triple chain of accountability. Civil servants are accountable to ministers, ministers are accountable to legislators, and legislators are accountable to the electorate. That is how we all function, sir. That's our democracy. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its own domain, then this key principle of the triple chain of collective responsibility becomes redundant, sir. By severing the first link of the triple chain of accountability, the bill is essentially contradicting the principles of parliamentary democracy in the very year that the Prime Minister has hailed us as the mother of all democracy. Can a mother treat her children this way, sir? Now, I do want to say, sir, Article 239AA, which... Huh? No, even stepmothers would not do this, I assure you. Confer a special status on the National Capital Territory, constitutionally entrenched a representative form of government, and incorporated a spirit of federalism so that the residents of the capital of India have a say in how they are governed, sir. It is the responsibility of the government of the NCTD to give expression to the will of the people of Delhi who elected them, sir. Now, the Supreme Court has said that Delhi has a sui generis status. They keep saying it's not a full state, but it has a special status. The court noted that the principles of federalism and democracy are interlinked, since the state's exercise of legislative power gives effect to people's aspirations, and that federalism, I'm quoting the Supreme Court, creates dual manifestations of public will in which the priorities of the two sets of governments are not just bound to be different, but are intended to be different, quote unquote. So what are they talking about, sir, on the Treasury benches? Now, the Supreme Court's May judgment reiterates the principle spelt out by its 2018 judgment that ministers bear responsibility before the legislature for every action undertaken by public officials in their respective department. The court has observed a paramount feature of the federal constitution is this distribution of powers in such a way that the ministers exercise their exclusive power over administration. Now, how can you then say that a minister is responsible for an official who in fact can supersede him in this, on the provisions of this bill? If you are a minister, Mr. Chairman, sir, and your official is taking a decision you don't approve of, how are you accountable? What happened to the core principle of parliamentary democracy, sir? And you cannot hold your officials accountable even for bureaucratic delays. They are larger than you, sir. As Supriya Sule said, the selected are overtaking the elected. Now, the Lieutenant Governor under Article 239AA has to act on the aid and advice of the Council of Ministers, except when exercising discretionary powers. Now, the Transaction of Business Rules of the Government of NCT Delhi, 1993, provides that certain matters must be submitted to the LG
through the Chief Minister and Chief Secretary for his opinion prior to the issue of any order. And these are spelled out, sir. Peace and tranquility of Delhi, relations of the Delhi government with other state governments, and relations of the Delhi government with the Supreme Court, the High Court of Delhi, and summoning, proroguing and dissolving of the Legislative Assembly. The bill expands those mentioned matters now to include the relations of the Delhi government with the central government. Additionally, it expands the powers of the Lieutenant Governor's opinion to have sole discretionary power on these matters. If there is any difference of opinion, even on matters beyond these three items, between the LG and the CM, the LG takes precedence. Now, this is the point that my respected colleague from the DMK was making, sir. Already in a time when there is a lot of controversy about the powers being exercised by governors in many states, we are now giving the Lieutenant Governor of Delhi an unprecedented degree of power over the elected representatives of the people who are supposed to implement the wishes of the public according even to the Supreme Court, sir. I'll conclude in 2 minutes, sir. The basic point is, you all know, Lieutenant Governors and Governors are supposed to act on the aid and advice of the Council of Ministers on matters within their executive competence. So you're contradicting the 2018 judgment of the Supreme Court, which stated that the decision-making power lies with the elected government. How can this pass the filter of this hallowed house, sir? What we have repeatedly seen under this government is a brazen effort to curtail the autonomy of states. The PM talks about cooperative federalism, but we are witnessing instead coercive federalism, sir, that seeks to centralize all power in the hands of the central government. And the problem is, it looks as if in the new India, some states will come first if they're ruled by the right party. Others must remain subservient to the political wishes of those in Delhi. I want to conclude, sir, with just two more thoughts. The first is, there are multiple aspects to this bill. There's been not to the bill specifically, but to what the bill represents. The cultural aspect of assaults on states' rights by the unjustified push towards imposing Hindi on the southern states. There's a law and enforcement angle through the weaponization of independent regulatory and investigative bodies like the ED, the CBI, the IT department. There's also definitely the use of legislation like the Disaster Management Act. We saw an obscure provision of which was used to ride roughshod over states' rights in imposing successive lockdowns during COVID without consulting states. We've seen, sir, in the creation and misuse of the PM Cares Fund, which limited the flow of cash to the state-run chief ministers' disaster relief funds. We've seen this with the acceleration of centrally sponsored schemes, which now seeks conclude. to... Sir, I'm just illustrating the problem of states' rights and federalism, sir. So I do want to say, and finally the large number of cesses that are currently being levied by the central government, the proceeds of which are not being shared with states, sir. So I'm sorry to say, is this a new definition of na khaunga, na khane dunga? I'm very, very concerned, sir, that this legislation is putting uniformity and central control over the democratic interests of our country that the Prime Minister hails. And I do want to stress, fundamentally, this is a basic constitutional question. The highest court of the land has ruled in favour of both the spirit and the letter of the Constitution. Sir, we owe ourselves more respect. So Speaker Sahab bolte hain ki is sabha ki garima ko respect karo, sir. We should definitely treat this House with more dignity than to let such a travesty of a bill pass this House. Thank you, sir, and Jai Hind. जी मसूदी साहब, चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया मुझे इस बिल पर बोलने की इजाज़त देने के लिए। जनाब, मैं द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 की मुखारबत में खड़ा हूँ। जनाब, दरअसल ये एक हमला है आइन पर और आइन के जो फंडामेंटल, जो बुनियादी आइन की जो रूह है उस पर ये हमला है। तो जनाब, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यहाँ ये कहा गया कि फेडरलिज्म, इंडिया एक फेडरल स्टेट नहीं है और ये फेडरलिज्म इसका हिस्सा नहीं, इसके आइन का। जनाब, केशवचंद्र भारती केस में स्पष्ट किया, साफ किया सुप्रीम कोर्ट ने कि फेडरलिज्म एक बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो इसको पामाल किए जाने की कोई इजाजत नहीं है। तो जनाब, दरअसल बात क्या है, मामला ये है कि ये लोकशाही और अफसरशाही के दरमियान एक मामला है। ये प्रयास किया जा रहा है कि अफसरशाही हो और लोकशाही नहीं हो। देखिए जनाब, आइन के तहत जो जब हमने अपने खुद को एक आइन दिया, वी द पीपल, हम अपने आप को आइन दिया, तो हमने एक नजरिया दिया कि ये कहीं मैप आउट किया और ये कहा कि कैसे चलेगा हमारा मुल्क, कैसे चलेगा। उसमें रियासतों को हकूक दिए गए और मरकज को हकूक दिए गए।
लेकिन ये इजाजत नहीं दी और उनका ये बाज़ाब्ता डिमार्केट किया गया कि उनके स्फीयर ऑफ एक्टिविटी क्या होगी, क्या अपना अपना स्फीयर होगा। लेकिन ये जो बिल है, इस बिल से कोशिश ये की जा रही है कि जो हुकूक हैं, जो भी इख्तियारात हैं दिल्ली के, वो खुद ले जाए। जब यहाँ बार बार जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ, और होना भी चाहिए था, क्योंकि ये मामूल बन गया इस सरकार का कि आक्रमण करने का आईन पर। और ये आक्रमण हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब एक स्टेट के 2 हिस्से किए गए और दफा 370 और 35A को पामाल किया गया और आईन रोंद कर वो सारे फैसले किए गए। तो जनाब, आप 356 का सहारा लेकर जो किसी भी जगह एक लेबॉर्ट्री बनाया गया जम्मू कश्मीर को, ये जो लेबॉर्ट्री बन गई और तजुर्बा किया गया, वो किसी भी सूबे के साथ, किसी भी स्टेट के साथ किया जा सकता है। 356 का सहारा लेकर एक स्टेट के 2 हिस्से किए गए और सबस्टेंटिव चेंजेस किए गए 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की गई, जबकि 356 एक इमरजेंसी प्रोविजन है और वो रेस्टोरेटिव है, वो सिर्फ जमहूरियत बहाल करने का एक प्रयास है, एक मामला है। तो जनाब क्या नहीं, और आजकल क्या किया जा रहा है, 1.5 करोड़ लोगों को जनाब कोई असेंबली नहीं है 9 साल से, कोई हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं, वहीं पर आओ ना, क्योंकि उसके साथ मुंसलिक है ना। तो कोई हुकूमत नहीं है और नहीं असेंबली का इंतखाब करने के लिए, मुंतखब करने के लिए इनके पास कोई हिम्मत है। तो जनाब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है नॉर्मलसी का। जनाब आज जम्मू कश्मीर में छोटे जो ताजर हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, उनकी जायदादें जब्त कर रहा है। जब असली बिल पर आ रहा हूँ जनाब, कल यहाँ कहा गया कि 800 यूनिट बनाएंगे। आज ही मुझे कश्मीरी पंडित दोस्त ने फोन किया कि नहीं, मुलाजिमों को उनके जो वहाँ जहाँ पर उनको रखा गया जम्मू कश्मीर में काजीकोट वगैरह में नहीं, अब बिल पर आऊंगा। तो जनाब ये भी उसी तसलसल में है जो वहां किया गया, ये भी उसी तसल्सल में, और यही बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है, क्योंकि इतना एक स्टेटमेंट है कि फेडरलिज्म है ही नहीं इंडिया में, ये फेडरल स्टेट है ही नहीं। अब जनाब इस बिल को देखिए, सारा प्रयास है, सारा मकसद है केंद्रित करना जो भी पावर है, जो भी इख्तियार है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को, ताकि एक चुनी हुई सरकार जो है, उस चुनी हुई सरकार के जो हुकूक हैं, उसके जो इख्तियारात हैं, उनको बिल्कुल खत्म किया जाए और उनको बिल्कुल गैर मौसर बनाया जाए। अब जनाब अगर थोड़ा सा एक देखेंगे जनाब, इसमें प्रयास है, इसमें यह कहा गया है कि एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसमें केंद्रित होंगे, जिसमें मरकूज होंगे सारी पावर्स। अब जनाब उसके क्या इख्तियारात हैं, अगर वहां पर सहमति भी हो, अभी कहा गया कि अगर ये होगा कि चीफ मिनिस्टर को वो रूल करेंगे 2 ब्यूरोक्रेट्स जो मरकज के बनाए हुए होंगे, तो ये कैसा सिस्टम है। लेकिन अगर वो सहमति भी हो, फिर भी आप देखिए, फिर भी जो रिकमेंडेशन अगर वो यूनानिमस भी हो, फिर भी इख्तियार है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दरकिनार करने का और वापस भेजने का। तो जनाब ये कैसा सिस्टम बनाया जाए, कैसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जबकि एक चुनी हुई सरकार जो है, चुनी हुई असेंबली है, उसके जो इख्तियारात है और उसका जो चुना हुआ वजीर आला है, उसको बिल्कुल डाउनग्रेड करके और उसके सारे इख्तियारात को बिल्कुल गैर मौसर करके एक इख्तियारात मरकूज किए जा रहे हैं जो नॉमिनी है। जैसे जम्मू कश्मीर के सिलसिले में सदर जमहूरियत ने खुद की कॉन्फ्रेंस खुद ली, क्योंकि वहां के गवर्नर जो थे उनके बनाए हुए थे, वो कैसे कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस हुई, जो आइन का तकाजा था वो दरकिनार किया गया। जनाब ये डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक तरफ जो दिशा में मुल्क जा रहा है, जी क्या किया जा रहा है, कैसे शोबों को। और जम्मू कश्मीर के मामले में जनाब बाकी जगह जनाब 3 लिस्ट थे, कंकरेंट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो खुदमुख्तारी थी उसमें जनाब स्टेट लिस्ट था ही नहीं, क्योंकि जो हमने दिया था केंद्र को सिर्फ वही केंद्र के पास, बार उधर चले जाते हैं। और कहाँ जाऊँ, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जम्मू कश्मीर के बगैर और कहाँ जाऊँ। तो जनाब बस कंक्लूड करूंगा। तो जनाब बात यह है कि जनाब ये भी उसी गैर, अब देखिए एक और बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की। जब अगर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सामने मामला है, तो प्रॉपर्टी ये है, मॉरलिटी ये है, एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाए, वो क्या कहेगा फिर किया जाए। हो नहीं रहा, जिस तरह यहाँ अमेंडमेंट बिल हो रही है, अरे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ये है कि हम टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, उनको अपना फैसला दे दें। जैसे बिल की अमेंडमेंट लाई गई वो भी और उसको ऑपरेशनल किया गया, भाई ये जो मॉरलिटी है, जो एथिक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, उसका पास प्लीज। जब मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल को मुखालफत करता हूँ और ये मैं इस्दा करता हूँ इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल आईन के मुखालिफ है। जी श्री अब्दुल समद सामदानी जी, प्लीज। थैंक यू सर।
Sir, I oppose this bill. Sir, it is a very critical legislation that is definitely going to upset and disrupt the delicate balance between the center and the states. Sir, it is against the very basic constitutional dictum that India shall be a union of states. I am sorry to say that it is a move for greater centralization against Part 11th of the Constitution, which governs the relation between the center and the state. Sir, this is not well intended. It is ill-motivated. And, sir, the motivation behind this legislation is very ulterior. It is equal to nullifying the recent constitutional bench verdict, which says, sir, I quote, the subjects of services covered under 41 state list will fall under executive and legislative domains of the Delhi government, unquote. Sir, that is why the legislative quality and the competence of this bill is under question. Sir, we all know that it is against cooperative federalism. Nobody can justify. Whatever points may be brought by the learned members on the other side, you can't conceal the negative aspects of this bill, which goes against the very spirit of cooperative federalism. Sir, it is highly condemnable that potentially divisive issues are brought to focus. It is not for the good of the nation. Maybe it is done by the government in the run-up to the next year's election. But, sir, it will not be for the good of the nation. Sir, another worst example for this kind of negative attitude is pitchforking and triggering the dormant and contentious debates around the Uniform Civil Code. That is also done in this juncture. Sir, India has remained uniquely unified despite infinite multiplicities of the country in various spheres of its life. So, sir, we have to protect the values and ethos of cooperative federalism. It is by protecting the diversity alone we will be able to protect the values of federalism. Sir, the diversity cannot be subsumed in an artificial uniformity. That is what we want from the government also. Sir, I can't understand why the government is rushing for and pushing for this kind of negative legislation, which are against the very norms of social, religious, linguistic, ethnic, and political diversity of the country. It is going to surely affect badly our structures of fiscal federalism, linguistic federalism, cultural federalism, and also political federalism. As well as I add our service-oriented federalism, which this new legislation is definitely going to badly affect. So, sir, I have to say that it is an attempt to bolster center's hold on the capital's administration, an encroachment on the remit of the state government, and an expanding the ambit of the center. Sir, we can't understand. Instead of intervening in the matters of and setting right the burning matters in the states like Manipur and Haryana, why the government is bringing forth this kind of very negative legislations which are against the very spirit of Constitution? This bill under discussion is, sir, against Article 2(3)AA, and also it is against the recommendations of Sarkaria Commission, Venkatachalya Commission. Nobody can conceal this thing. Sir, the foundation of this enactment is very, very weak. As the poet said, sir, Jo Shakh Nazuk pe Ashiyan banega, wo na paidar rahega. So, sir, the nest built on a very weak and tender branch of the tree, it will not last. And the ये सारी कोशिश सर हो रहा है
दिल्ली को जीतने के लिए, दिल्ली को सर हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। दिल जीतने के लिए ये काफी नहीं होगा। इसी तरह के कानून से दिल को जीत नहीं सकते। दिल्ली को जीतने के लिए मोहब्बत, प्यार, रवादारी, भाईचारगी चाहिए। ये आपके पास नहीं है, और इसके लिए राजनीतिक शक्ति भी चाहिए जो गवर्नमेंट के साथ नहीं है। So sir, I have to remind the government that the Supreme Court had held that the states are not mere appendages of the center. This is the decision and the declaration made by the Supreme Court. And also I have to request the government to pay an urgent notice to Ambedkar's, sir, 1 minute. Ambedkar's December 1952 lecture on conditions precedent for the successful working of democracy. So, sir, what I feel is that this kind of negative legislations will affect the spirit of our federalism, our cooperative federalism, and I oppose this kind of an enactment, and I request the government to withdraw this kind of a legislation. Thank you, sir. Thank you. महोदय, मैं जब आज आ रहा था संसद में तो हमें एक दिल्ली के व्यक्ति मिले, बोले जरा जाके भैया बताना मुझे कि जो व्यक्ति लगातार सबको चोर कहता रहा, आज उसी को सही ठहराने कैसे लोग बैठे हैं। मैं छोड़ देता हूं, लेकिन एक बात सदन को ध्यान रहे अध्यक्ष जी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे जो आज व्यक्ति बैठा है वो पहला मुख्यमंत्री नहीं है, वो 5वां मुख्यमंत्री है। इनके पहले शीला दीक्षित जी बैठी थी, उनके पहले सुषमा स्वराज जी बैठी थी, उनके पहले साहिब सिंह वर्मा जी बैठे थे, और पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे। कभी भी इस तरह का संकट दिल्ली में नहीं आया था जो आज आया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक सदस्य लोक लाज की बात कर रहे थे, बिहार के नेता हैं। बिहार के नेता के मुंह से लोक लाज सुन के हमको हमारे भोजपुरी का एक कहावत याद आ रहा था कि सुपवा बोले तो बोले चलनियो बोलत अटे, जना में 72 छेद बाटे। फिर भी सभापति महोदय, हम भी चुन के आए हैं। हमारे साथियों ने कई बार कहा वो चुन के आए हैं, चुन के आए हैं, चुन के आए हैं। हम भी चुन के आए हैं, 2-2 बार चुन के आए हैं। और यही नहीं, हम निगम में भी चुन के आए हैं, और ये सभी चुन के आए हैं जो ये कानून बनाने वाले लोग हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उनको अपने ही कानून बनाने की क्षमता, योग्यता पर संदेह हो गया है। कोई बात नहीं, डिसाइड करेगी देश की जनता। जब कोविड आया था तो याद करिए क्या हुआ था। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सड़कों पे थे। जब कोविड आया तो ये अस्पताल दिल्ली का दौरा कर रहे थे, और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री थे वो कहीं अंदर बैठ करके पता नहीं कौन सी मच्छरदानी ओढ़ के बैठे हुए थे। जब हमारे दिल्ली में बाढ़ आया तो अमित शाह जी की व्यवस्था संभाल रही थी, और ये व्यक्ति के घर में जब पानी घुसने लगा तब जाके, जैसे कभी कभी वो बिल में पानी जाता है तो कुछ जानवर निकल के आ जाते हैं, उस तरह से ऐसा देखा हमने, और दिल्ली बर्बाद हो गई। मैं आज आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सभापति महोदय, तब या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीश महल में सो रहे होते हैं या तो शराब घोटाले की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने अब बताना चाहता हूं कि इस डिबेट से वो व्यक्ति बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको तो अब कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि जो कोविड में किराएदारों से वादा किया था कि किराएदार लोग भागना मत, तुम्हारा किराया दिल्ली सरकार देगी, लेकिन आज तक किराएदारों को यह सुविधा नहीं मिली। यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, हमारे साथियों ने भी कहा यमुना गंदी कैसे हो गई, डीटीसी घोटाला कैसे हो गया, यहाँ पीएम आवास योजना क्यों नहीं चालू है, यहाँ पे आयुष्मान योजना क्यों दिल्ली में बंद हो गई, यहाँ बुजुर्गों का पेंशन क्यों बंद है, यहाँ जल बोर्ड घोटाला क्यों हो गया, यहाँ गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं 9 साल से बन रहा है। सभापति महोदय, आप वहां बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जहां गरीबों के लिए अनाज कितनी भारी मात्रा में दे रहे हैं। दिल्ली के गलियों में जाइएगा तो अनाज के लिए राशन कार्ड नहीं बनने के कारण लोग रो रहे हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूं
कल शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री को पब्लिक ने पकड़ लिया। पब्लिक ने पकड़कर पुलिस नहीं होती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। हम चाहते हैं नेताओं पे हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन आज दिल्ली इस प्रकार से रो रही है। एक नया कॉलेज नहीं 10 साल में, एक नया स्कूल नहीं। ये सवाल अब पूछे तो कौन पूछे। झुग्गी वासियों को घर देने का वादा था दिल्ली मुख्यमंत्री का, देना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री जी को। अभी 3025 लोगों को दिया। कई हमारे साथियों ने पूछा अध्यादेश क्यों आया। आप याद करिए 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो दूसरे दिन जिस व्यक्ति के ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति फोन पे कहा है कि ये व्यक्ति मेरा खास है, इसको 100 करोड़ रुपया दे देना, वो जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं। आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की अभी स्पष्टता भी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, जैसा हमारे कई साथियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि अस्पष्टता को बनाए रखने के लिए यह सदन कानून बना सकता है। उसके बाद भी बिना उस पैरा को पढ़े हुए पैरा 95 को इन्होंने तुरंत सवेरे किस अधिकारी का ट्रांसफर किया, जो विजिलेंस ऑफिसर था। मेरे विद्वान साथियों, आप भी सोचो आप किसका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो गृह मंत्री जी से कहूंगा कि मुझे कई एंगल से ये शंका हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। सभापति महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, आपको मैं बताता हूं क्यों। अभी जब यमुना जी में बाढ़ आया, अभी जब मैं यमुना जी में बाढ़ में गया तो मैं मुख्यमंत्री का एक बयान सुनता हूं, कई लोगों के कागज बह गए हैं, उनके कागज फिर से बनाए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं किसके कागज बहे। हम तो जिनके जिनके लिए खाना लेकर के गए, जिनके जिनके लिए हम रोटी लेकर के गए, जिनके लिए हम नाव लेकर के गए, वो तो अपना सारा सामान लेकर के सड़क पे सिर्फ टेंट का इंतजार कर रहे थे। कागज किसका बनाने की बात कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। क्योंकि मुझे बिहार की महिलाओं ने कहा, मैं आपको वीडियो दे सकता हूं, उनका बयान दे सकता हूं। बिहार की, यूपी की महिलाएं कह रही हैं हमें तो ये मुआवजा भी देने को तैयार नहीं है। मेरे सभी साथियों, आप विचार करिएगा। और मैं ये बात बताते हुए, हमारे नेता विपक्ष कह रहे थे कि ये किस कारण से ये बिल आ रहा है। सुप्रिया सुले जी यहां बैठी थी, अभी है नहीं, उन्होंने मिस कोट किया सदन को। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्ण राज्य पे हम हमेशा मैनिफेस्टो में देते हैं। मैं तो दिल्ली में 2013 से हूं, न 2013 के चुनाव में, न 2014, न 2015, न 2017, न 19, न 20, कभी भी हमने मैनिफेस्टो में नहीं दिया। आप इतने बड़े सदन को गुमराह न करें। और जहां तक एलजी की बात है, एलजी वही टोकते हैं जहां संविधान का हनन होता है। सभापति महोदय, मैं G20 होने वाली है दिल्ली में। अभी एक दिन मैं अपने घर में रात के 12:30 बजे सोने की तैयारी कर रहा था, तभी पता चला एलजी महोदय बाहर सड़कों पे पेड़ पौधों की वो सुंदरता देखने आए हैं। मैं हैरान था। मैं घर से बाहर निकला और उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने शीश महल में सोए हुए हैं। तब मुझे ये कहना पड़ता है कि सभापति महोदय, ये जो बिल है ये दिल्ली के खुशियों का बिल है। इस बिल को मैं तो प्रार्थना करूंगा आप बहस करिए, बहस करना ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी साथी बोल रहे हैं, कई दिनों के बाद बोलने का मौका मिला है। लेकिन ये बिल दिल्ली के झुग्गी वासियों का, दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली की महिलाओं का, सबके अधिकार की रक्षा करने वाला है। इसको आप सब पास करें, यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष के तरफ से मुझे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथ साथ में ये जो बिल है दिल्ली के बारे में